रूप में साइना स्कूल से पधारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर आदित्य कुमार शर्मा सर, रिस्पेक्टेड प्राचार्य डॉक्टर सी राजेश कुमार सर एवं साइना महाविद्यालय के समस्त एचओडी, टीचर्स, स्टाफ एवं आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आज का विषय है विकसित भारत 2047। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन, एक विजन, जो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर पहचान दिलाना, ये हम सब भारतवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र दोनों ही अपने आप में अलग अलग हैं। हम विश्व स्तर पर आज जितने भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन सब में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज उन्होंने विकसित राष्ट्र की कल्पना की। उनके मन में एक प्रश्न था कि विकसित राष्ट्र, चूंकि भारत हर क्षेत्र में अग्रणी है, हर क्षेत्र में अनेकों नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, तो विकसित राष्ट्र भारत को क्यों नहीं कहा जा रहा। आप सभी को विदित है, हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, अभी आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। निश्चित रूप से 75 वर्ष पूर्ण होने पर, चूंकि हमारी आज़ादी कैसे मिली भली भांति आप लोग परिचित हैं, उस विषय पर बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़े गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि 2047 तक, चूंकि आज़ादी प्राप्ति के बाद जो स्थिति थी, आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारे देश का महिलाओं के प्रति और हमारे देश का सारा विकास किस गति पर था, किस पोजीशन में था, लगभग सब कुछ हमसे छिन चुका था, कुछ भी नहीं था धरातल पर। लेकिन जैसे भी हमारा देश आगे आगे धीरे धीरे प्रगति करते हुए विकासशील देश, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन जब हम विश्व स्तर पर बात करते हैं, एक विश्व स्तर पर खड़े होते हैं, तो हमें अपने मन में एक ग्लानि फील होती है कि हम आज भी विकासशील देश क्यों हैं। जब हम हर क्षेत्र में, चाहे तकनीकी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हम विश्व पटल पर विश्व गुरु बने हुए हैं। हमारी संस्कृति, हमारा देश का सनातन, हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, परंपरा, अनेक विश्व स्तर पर हम आज कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज आवश्यकता है हमें विकसित राष्ट्र को घोषित करवाने की। हमारा देश, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, हमारा देश चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारा देश चाहे तकनीकी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार विकास करते ही जा रहे हैं और उनका स्वप्न है 2047 तक विकसित राष्ट्र घोषित करना, जो हम सब भारतवासियों को इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी देश का विकास किसके ऊपर निर्भर है? युवाओं पर। यदि हमारा युवा जाग जाएगा, हमारी युवा नीति, हमारे देश में आज माननीय प्रधानमंत्री जी युवा नीति, नई शिक्षा नीति, हमारे देश में किसानों के लिए हो, चाहे गरीब के लिए हो, चाहे हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं है जहां पर उनकी योजनाएं टॉप से लेकर के निचले स्तर पर एक ग्रामीण तबके के युवक को लाभ दिलाने का काम ना कर रही हो। चाहे हम बात करें अभी माननीय मोदी जी की, तो उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिससे हर नागरिक को समृद्ध बनाना।
अगर हमारे देश का युवा, हमारे देश का हर नागरिक समृद्ध हो जाएगा, उसका कौशल विकास हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये जो हम एक स्वप्न देख रहे हैं, ये स्वप्न को साकार होने में वह दिन दूर नहीं जब हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अपने अन्य देशों के साथ खड़ा होता पाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन राशन, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। जब इस चीज़ की कल्पना की गई थी कि हमारा देश वन नेशन वन राशन कैसे बनेगा, तो सब लोगों ने इसको इग्नोर किया, बोला ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक स्वप्न, एक ऐसी क्रांति जो डिजिटल इंडिया, चाहे हम जन धन योजना की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास की बात करें, चाहे अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के टाइम पे सबसे ऐसा विश्व का कोई देश बाकी नहीं था जो कोरोना से ग्रसित ना हुआ हो। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा विश्वास था। आप लोगों ने देखा होगा सेतु ऐप जो कोविन ऐप था, उसके माध्यम से एक पेशेंट को ढूंढना कितना आसान हो गया था। उस ऐप के माध्यम से वहां तक पहुंचना और उसका समुचित इलाज, ये हमारी तकनीकी क्षेत्र में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, कही जा सकती है। तो हमारे देश का युवा, हमारे देश का किसान, हमारे देश का एक गरीब नागरिक और हमारे देश का सुशासन व्यवस्था अगर सुधर जाएगी तो निश्चित रूप से हम विकसित राष्ट्र होने में हमें वो दिन दूर नहीं होंगे जब हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। तो आप सभी को मेरा सभी, चूंकि आप युवा हैं, निश्चित रूप से आप विकसित भारत 2047 का जो स्वप्न है उस स्वप्न को साकार करने में सहभागी बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज का सेमिनार का जो विषय है यही तकनीकी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारा देश 2047 तक कैसे विकसित राष्ट्र बन सकता है, इसके लिए आप आज सहभागी हुए। मेरा साइना महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप निश्चित रूप से इसमें अग्रणी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. As we all know that we are in a country, so it's a proud moment for all of us that we are gradually taking the things which is nowadays is coming up, that is the technological transformation. Now, I request to our keynote speaker, Dr. AMRITKAAL Sharma sir, please come forward and give your valuable insight and share your thoughts with our students. Thank you so much. All the students present over here, the faculty over here, and definitely the principal is not here, but yes, he is the one who took that initiative to invite me to this beautiful session. And we call it as a session for what just Sharat said, Vikasit Bharat. Viksit Bharat 2047. And I am over here to speak to you about the digital transformation. What is digital transformation, first of all? To begin with, what is digital transformation? I remember, in fact, a lot of changes are taking place. And in this era of changes, we'll be far left behind if we do not keep updating ourselves. I don't know when this transformation, digital transformation started, maybe way back in 80s, somewhere like that. And I mean, that was the time I was a schoolmaster. As a schoolmaster, I went out to take up a lesson in computers. Computers was very new, very in the initial stages, nascent stages. So 1983, I went and did a course in computers. It was not so user-friendly computer that time.
I had a large computer, big computer, with a 5.25-inch floppy disk, 64 KB RAM. There was no Word or PowerPoint that time. Had to write a program for it using basic COBOL or Fortran language. That was the time I got an idea that with digitalization, things can improve. Now, whatever I learned there, I tried to use it in my school over there in bringing in or developing a software for accounting procedures and library software. And when this happens, the work which was done by 5 people, 6 people, 10 people, that was reduced. And very quick results we could get. Since then, the transformation is taking place. Today, when we talk about transformation, that's rightly said by the principal. On a click of a button, you can access anything. The whole world is there in your palm. Your mobile phones, they've got everything. And that is what digitalization is. We talk about social media. We talk about the social marketing that we have. We are talking about the changes in the economy which is taking place, or the changes that take place in our systematic improvement in education field. All these are the results of digitalization. So the transformation is it's a very wide transformation. And what we expect that by 2047, the transformation, India being one of the countries where a lot of technological advancements are taking place, and the brains are there, real brains are there, technological brains are there. You go anywhere outside the country, anywhere in the world, you will find the Indian over there, sitting, heading the organization. Just because the type of technology that we are researching upon is taking up to those high levels. So I have a presentation for you, and I'll take it up with that. So we're talking about digital transformation of India 2024 to 2047. Just about 23 years. In 23 years, how much change would take place? So that's we'll talk about the introduction landscape. What we are talking about is in our country, what type of transformation we take. The current scenario, the government initiatives, the digital infrastructural development, e-governance and digital services, digital economy. There's a lot of growth, economic growth. Education and skill development, healthcare transformation, smart city and infrastructure, and Vision 2047. Those are the things that we will just touch upon. And though digital transformation is very, very wide, but there's a short period that I have been given, and given because of my other commitments. So we'll touch upon these points. Right. Digital transformation refers to the process of using digital technologies to fundamentally change how business operate and deliver value to the customers. That's one more very important thing. Whatever transformation takes place, does that help with some value or not? We talk about the customers. I mean, today you are sitting over here, you are basically customers. You are taking away something.
how? Or if I'm standing over here explaining to you certain things, it's just to enrich you. And to enrich you, I'm using a technology. So that is it. It involves integrating digital technology into all aspects of an organization, reshaping its process, culture, and customer experiences. We keep changing. We have to adapt to the situation also. Not only adapt to the situation, the research which is going on, this research tells us, okay, what is the new thing that has to be brought into our system. And according to that, the changes take place. According to that, the software is developed. According to that, the hardware is developed. If we have the right software, we get the right results. Today, in the field of marketing, how do we analyze? You will find that, you must have heard also, there are a lot of analysts now working. And these analysts, they analyze the thing. Just on a click of a button, whether the company is doing good, or which is the area the company is not doing good, which are the team members which are not putting in their 100% effort. So that's all we get on a click of a button. So customer satisfaction is very, very important. And today, young boys and girls like you, I'm sure you must be thinking in your dreams, you must be thinking how to improve your own self, your own growth. And that is where the digitalization comes and plays its role. So India since independence, if you look at it, how India has evolved since independence. Population, if you look at it, 1950, 357.6 billion. Today we are 5.35 billion. That is not digitalization. But are we using that population for the right purpose? That is something, a question mark where we have to look into. The GDP at factor cost, that is in 1960 it was $36.54 billion. In 2018, $2,597.49 billion. GDP per capita, if you look at it, in 1960, $83.79 billion, and today it is $1,963.55 billion. If you look at the imports and exports, again, in 1950, if you look at it, it was that is $1.3 billion. And in 2016, that's the figure. Basically, there was a difference in the figures. That's why it was import is 356.70 and exports is 260.33 billion dollars. The length of India's roads in 1950 that's 0.4 million kilometers, and today it's 2018 it's increased now. 2018 it is 5.6 million kilometers. The length of the roads has increased. Food grain production. Sharad said agricultural. We are agricultural country. Look at the food production over here. In 1951, it was 50.80 million tons. Today we are more than 277.49 million tons. So the continuous changes are taking place. Now when these changes are taking place, in the earlier years, 1950s and 40s and 60s, the changes were very, very slow. Later on, somewhere in the 80s and 90s, if you look at the data today, yesterday I was only seeing that data, I found that after 1980s, or somewhere in 1985 or 90s, towards 90s, the production, the increment which has taken place is at a very fast pace. A very fast pace. And when it is at a very fast pace, we have to keep ourselves also
at that pace. Otherwise, we'll be left behind. A day will come, we'll be obsolete. When we talk about, okay, I'm 60-year-old person standing over here. If I do not keep myself updating, I'll be obsolete. I'll be out of society. I will not be a part of society also. The community will not let me enter. So each one of you have a right to keep yourself updated, to be a part of the system. And when you are part of the system, the growth is fast also. Look at the growth stars. If you look at India is 6.5, Philippines 5.3, that's the growth. Indonesia 5.1, China 5.1, Malaysia 3.1.